अनेक समयबद्ध योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही है। घर में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता से लेकर अपना घर होने के सुरक्षाजनक अनुभव तक, ये सभी बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, ना कि विशेष सुविधाएं। ये मुद्दे किसी भी राजनीतिक या आर्थिक विचारधारा से परे है और इन्हें मानवीय दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। सरकार ने केवल जन कल्याण योजनाओं का विस्तार और संवर्धन ही नहीं किया है, अपितु जन कल्याण की अवधारणा को भी नया अर्थ प्रदान किया है। हम सभी उस दिन गर्व का अनुभव करेंगे जब भारत ऐसे कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जहां शायद ही कोई बेघर हो। समावेशी कल्याण की इसी सोच के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डिजिटल विभाजन को पाटने और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के हित में समानता पर आधारित शिक्षा व्यवस्था के निर्माण को समुचित प्राथमिकता दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के विस्तारित सुरक्षा कवच के तहत सभी लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य है। इस संरक्षण से गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों में एक बहुत बड़ा विश्वास जगा है। हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का मान बढ़ाया है। पिछले साल आयोजित एशियाई खेलों में हमने 107 पदकों के नए कीर्तिमान के साथ इतिहास रचा और एशियाई पैरा खेलों में हमने 111 पदक जीते। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि महिलाएं हमारी पदक तालिका में बहुत प्रभावशाली योगदान दे रही है। हमारे श्रेष्ठ खिलाड़ियों की सफलता से बच्चों को विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा मिली है, जिससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है। मुझे विश्वास है कि नई आत्मविश्वास से भरपूर हमारे खिलाड़ी आगामी पेरिस ओलंपिक में और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्यारे देशवासियों, हाल के दौर में विश्व में अनेक स्थलों पर लड़ाइयाँ हो रही है और दुनिया के बहुत से हिस्से हिंसा से पीड़ित है। जब दो परस्पर विरोधी पक्षों में से प्रत्येक मानता है कि केवल उसी की बात सही है और दूसरे की बात गलत है, तो ऐसी स्थिति में समाधान परक तर्क के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य से तर्क के स्थान पर आपसी भय और पूर्वाग्रह ने भावावेश को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण अनवरत हिंसा हो रही है। बड़ी पैमाने पर मानवीय त्रासदियों की अनेक दुखद घटनाएं हुई है और हम सब इस मानवीय पीड़ा से अत्यंत व्यथित है। ऐसी परिस्थिति में हमें भगवान बुद्ध के सारगर्भित शब्दों का स्मरण होता है। नहीं बेरेनो वेरानी समन्तिद कुदाचनम ओबेरेन च समन्ति एसो धर्म सनातन। इसका भावार्थ है, यहाँ कभी भी शत्रुता को शत्रुता के माध्यम से शांत नहीं किया जाता है, बल्कि अशत्रुता के माध्यम से शांत किया जाता है। यही शाश्वत नियम है। वर्धमान महावीर और सम्राट अशोक से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक भारत ने सदैव एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अहिंसा केवल एक आदर्श मात्र नहीं जिसे हासिल करना कठिन है, बल्कि ये एक स्पष्ट संभावना है। यही नहीं, अपितु अनेक लोगों के लिए ये एक जीवंत यथार्थ है। हम आशा करते हैं कि संघर्ष में उलझे क्षेत्रों में उन संघर्षों को सुलझाने तथा शांति स्थापित करने के मार्ग खोज लिए जाएंगे। वैश्विक पर्यावरण संकट से उबरने में भी भारत का प्राचीन ज्ञान विश्व समुदाय का मार्गदर्शन कर सकता है। भारत को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने में अग्रणी योगदान देते हुए और ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को नेतृत्व प्रदान करते हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। भारत ने पर्यावरण के प्रति सचेत जीवन शैली अपनाने के लिए लाइव मूवमेंट शुरू किया है। हमारे देश
में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का सामना करने में व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन को प्राथमिकता दी जा रही है तथा विश्व समुदाय द्वारा इसकी सराहना की जा रही है। हर स्थान के निवासी अपनी जीवन शैली को प्रकृति के अनुरूप ढालकर अपना योगदान दे सकते हैं और उन्हें ऐसा करने ही चाहिए। इससे न केवल भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। प्यारे देशवासियों, हमारे स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरी होने तक की अमृत काल की अवधि के दौरान अभूतपूर्व तकनीकी परिवर्तन भी होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकी बदलाव असाधारण गति के साथ सुर्खियों से बाहर आकर हमारी दैनिक जीवन का अंग बन गए हैं। कई क्षेत्र में भविष्य से जुड़ी आशंकाएं चिंतित करती है, लेकिन अनेक उत्साहजनक अवसर भी दिखाई देती है, विशेषकर युवाओं के लिए। हमारे युवा वर्तमान की सीमाओं से परे जाकर नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनके मार्ग से बाधाओं को दूर करने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है। हमारी युवा पीढ़ी चाहती है कि सभी को अवसर की समानता प्राप्त हो। वे समानता से जुड़े पुराने शब्दजाल नहीं चाहते हैं, बल्कि समानता के हमारे अमूल्य आदर्शों का यथार्थ रूप देखना चाहते हैं। वास्तव में हमारा युवाओं के आत्मविश्वास के बल पर ही भावी भारत का निर्माण हो रहा है। युवाओं के मनोमस्तिष्कों को संभालने का कार्य हमारे शिक्षकगण करते हैं, जो सही अर्थों में राष्ट्र का भविष्य बनाते हैं। मैं अपने उन किसानों और मजदूर भाई बहनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जो चुपचाप मेहनत करते हैं तथा देश के भविष्य को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर की पूर्व संध्या पर सभी देशवासी हमारे सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैन्य बलों का भी कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन करते हैं। उनकी बहादुरी और सतर्कता के बिना हम उन प्रभावशाली उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते थे जो हमने हासिल कर ली है। अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं न्यायपालिका और सिविल सेवाओं के सदस्यों को भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विदेशों में नियुक्त भारतीय मिशनों के अधिकारियों और प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को मैं गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। आइए हम सब यथाशक्ति राष्ट्र और देशवासियों की सेवा में स्वयं को समर्पित करने का संकल्प करें। इस शुभ संकल्प को सिद्ध करने के प्रयास हेतु आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। My dear fellow citizens, Namaskar. My heartiest greetings to all of you on the eve of the 75th Republic Day. My heart is filled with pride when I look back and see how far we have traveled despite adversities. The 75th year of the Republic is truly a historic milestone in the journey of the nation in many ways. This is an especially festive occasion, just as we celebrated the unique greatness and diverse culture of our nation during the Azadi Ka Amrit Mahotsav, when we completed 75 years of independence. Tomorrow is the day when we celebrate the commencement of the Constitution. Its preamble begins with the words, "We the people of India," highlighting the theme of the document, namely democracy. In India, democratic system is much older than the concept of Western democracy. That is the reason why India is called the mother of democracy. After a long and difficult struggle, on 15th August 1947, India became free from foreign rule. Yet, the task of framing the principles and processes
that would govern the country and unleash its true potential was still a work in progress. The Constituent Assembly spent nearly 3 years holding detailed discussions on all aspects of governance and produced the great founding document of our nation, the Constitution of India. Today, the nation gratefully remembers the leaders as well as the officials who contributed to the framing of our splendid and inspiring constitution. The nation is in the early years of Amritkal, the period leading to the centenary of independence. This is the time of an epochal transformation. We are given a golden opportunity to take the country to new heights. Contribution from every citizen will be crucial to achieve our goals. For this, I will appeal to all my fellow citizens to abide by our fundamental duties enshrined in the Constitution. These duties are essential obligations of every citizen towards making Bharat a developed nation when it completes 100 years of independence. Here I think of Mahatma Gandhi, who had rightly said, no people have risen who thought only of rights, only those did so who thought of duties. My dear fellow citizens, Republic Day is an occasion to recall our foundational values and principles. When we contemplate any one of them, we are naturally guided to the rest. Democracy implies diversity of culture, beliefs, and practices. Celebrating diversity implies equality, which is upheld by justice. Freedom is what makes it all possible. The totality of these values and principles is what makes us Indian. Guided by the sagacity of Dr. B.R. Ambedkar, the spirit of the Constitution, imbued with these foundational values and principles, has led us invariably on the path of social justice to put an end to all kinds of discrimination. I would like to mention here that the celebration of the birth centenary of a tireless champion of social justice, Sri Karpuri Thakurji, concluded yesterday. Karpuriji was one of the greatest advocates of backward classes who dedicated his life for their welfare. His life was a message. I pay my tribute to Karpuriji for enriching public life through his contributions. The ethos of our republic brings together more than 1.4 billion of us to live as one family. For this largest family in the world, coexistence is not an imposition of geography but a source of happiness, which finds expression in our Republic Day celebrations. Earlier this week, we witnessed the historic consecration ceremony of the idol of Prabhu Sri Ram in the glorious new temple constructed at his birthplace in Ajodhya. When this event will be seen in the wider perspective, the future historians will consider it a landmark in India's continued rediscovery of its civilizational heritage. The construction of the temple commenced after the due judicial process and the decision of the highest court of the land. Now, it stands as a grand edifice, giving a befitting expression not only of people's faith, but also as a testament to people's enormous trust in judicial process. My dear fellow citizens, our national festivals are momentous occasions when we together look back and look ahead. If we look at the year since the last Republic Day, there is much to be pleased about. The successful organizing of the Group of 20 summit in the capital under India's presidency was an unprecedented achievement. What was all the more noteworthy
was the way the people were involved in the G20 events. The ideas and inputs traveled not downwards from the top, but upwards from the bottom. The magnificent event provided lessons for all in making citizens participants in strategic and diplomatic matters that are in the final analysis going to shape their own future. The G20 summit also boosted India's emergence as the voice of the global south, adding a necessary element to the international discourse. We also progressed further towards the ideal of gender equality when the parliament passed the historic Women's Reservation Bill. I believe the Nari Shakti Bandhan Adhiniyam will prove to be a revolutionary tool of women's empowerment. It will also go a long way in improving the processes of our governance. When more women will be involved in the matters of collective importance, our administrative priorities will be more in tune with the needs of the masses. It was also the year when India went to the moon, becoming the first to land on the lunar South Pole region. After Chandrayaan 3, the Indian Space Research Organization rolled out a solar mission as well. Recently, Aditya L1 was successfully put into the hello orbit. We began the new year with the launch of our first X-ray polarimeter satellite called XPOSAT, which will study space mysteries like black holes. Many more space missions are planned in the current calendar year. I am happy to add that India's space journey is slated to cross new milestones. Preparations for the Gaganyaan mission, our first human spaceflight program, are proceeding smoothly. We have always been proud of our scientists and technology experts, but now they are aiming far higher than before and delivering too. India's space program is aimed at expanding and deepening the role of science and technology for the benefit of the entire humanity. The amount of enthusiasm we see in the country for the ISRO's initiatives is heartening. New achievements in this area have fired the imagination of the young generation. More children, I am sure, will become interested in science and cultivate a scientific temper. It will also inspire more youngsters, especially young women, to pursue careers in science and technology. My dear fellow citizens, India is moving ahead with confidence, which comes from and is also reflected by the robust health of the economy. Our GDP growth rate has remained the highest among major economies in recent years, and we have all reasons to believe that this extraordinary performance will continue in the year 2024 and beyond. What I find particularly noteworthy is that the same farsighted planning that fuels the economy has also given a push to the welfare drive to make the development inclusive in every sense of term. The government had increased the scope of schemes to provide free food to the weaker sections of society during the pandemic days. These measures were later continued to extend a helping hand to the vulnerable population to come out of that crisis. Expanding the scope of that initiative, the government has decided to provide free food grains to over 81 crore people for 5 years. This may be the biggest welfare initiative of its kind in history. Moreover, there have been a number of mission mode schemes to increase the ease of living for all citizens. From the availability of safe and adequate drinking water at home
to the security of having one's own home. These are basic minimum requirements, not privileges. These matters are beyond any political or economic ideology and must be seen from a humanitarian perspective. The government has not only expanded and enhanced the welfare schemes, but it has also redefined the idea of welfare itself. It will be a proud day for us all when India becomes one of those few countries where homelessness is a rarity. Similarly, the national education policy gives adequate thrust to bridge the digital divide and create a uniform educational structure for the benefit of the underprivileged students. The expanding insurance cover of the Ayushman Bharat scheme aims to bring together all beneficiaries under its umbrella and provides a great reassurance to the poor and the vulnerable. Our sportspersons have raised India's profile on the international stage. In the Asian Games held last year, we made history with a record breaking tally of 107 medals and we won 111 medals in Asian Para Games. We are glad to see that women are making very impressive contribution to our medal tally. Our sports stars have inspired children to take up diverse sports and games, helping them boost their self confidence. I am sure that our sportspersons who are infused with this new confidence will deliver an improved performance in the upcoming Paris Olympics. Dear fellow citizens, in recent times, many conflicts have emerged around the world, and several parts of it have been suffering from violence. When each of the two conflicting sides believes that it is right and the other is wrong, the way out should be found in the plight of reason. Unfortunately, instead of reason, fears and prejudices have fueled passions, leading to relentless violence. There have been a series of humanitarian tragedies on a large scale, and we feel aggrieved over the human suffering. In such times, we recall Lord Buddha's words, Nahi vereno verani samantidho kudachanam oberencho samanti eso dhammo sanantana. It means not at any time are enmities appeased here through enmity, but they are appeased through non-enmity. This is the eternal law. From Bardhaman Mahavir and Samrat Ashok to the father of the nation Mahatma Gandhi, India has time and again shown that nonviolence is not just an ideal that may be difficult to achieve, but it is a distinct possibility. In fact, it is a lived reality for many. Let us hope that the regions embroiled in conflicts will find a peaceful way to resolve conflicts and bring about peace. India's ancient wisdom can also help the world find a way out of the global environmental crisis. I am glad to see India at the forefront of promoting renewable sources of energy and taking a leadership position in global climate action. India has launched the Life movement for adoption of environment conscious lifestyle. The global community has appreciated our country's emphasis on individual behavior change for dealing with the issues of climate change. People everywhere can and must contribute by bringing their lifestyle in tune with Mother Nature. That will not only help save the planet for the generations to come, but will also enhance the quality of life. Dear fellow citizens, the period of Amritkal is also going to be the period of unprecedented technological changes.
Technological advances like artificial intelligence and machine learning have moved from headlines into our daily lives at a breathtaking speed. There are numerous areas of concern in the foreseeable future, but there are also exciting opportunities ahead, especially for the youth. They are exploring new frontiers. We need to do all we can to remove hurdles from their path and let them unleash their full potential. What they want is equality of opportunity. What they want is not the same old rhetoric of equality, but the realization of our cherished ideal of equality. It is, after all, their confidence that is building the India of tomorrow. Moreover, the mind of the youth is shaped by teachers who are the real architects of the nation's future. I would also like to make a thankful mention of our farmers and laborers who toil silently and make a mighty contribution to creating a better future for the nation. On the eve of this auspicious occasion, India also gratefully salutes the members of our armed forces, police, and paramilitary forces, without whose valor and vigil we would not have scaled the great heights we have. Before I conclude, let me offer my greetings to the members of the judiciary and civil services. My Republic Day greetings to the officials of India's missions abroad and the diaspora community. Let us all dedicate ourselves to serve the nation and fellow citizens in every way we can. My best wishes to all of you in this endeavor. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और अब यहां जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। आज यमुना और राम गंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। मैं बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों,